हमारे साथ हैं राधिका अतोटा मैम और बोस अतोटा सर। In the life, most of the times you don't even realize you are going through stress, anxiety. It becomes so part of you, and you so fall in love with this drama. मैं जान चुकी हूँ मेरा एंग्जाइटी कहाँ से आती है, वरीज कहाँ से आते हैं, क्या है ऐसा बोलने से, लाइफ से अपना सब ये दुख सब कहाँ से आते वो समझ चुकी हूँ। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो हम हैं PSSM में। हम हैं PSSM में हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनकी ध्यान की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सिर्फ हमें ही नहीं, वो खुद को भी बहुत कुछ सिखाते हैं। इसी श्रृंखला में हमने पिछली बार आपसे रूबरू कराया था पाकिस्तान के पिरामिड मास्टर्स को, और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं USA से 2 पिरामिड मास्टर्स। थोड़ा उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं राधिका अतोटा मैम और बोस अतोटा सर। जो मैम है राधिका मैम, वो 30+ ईयर्स से IT प्रोफेशनल रह चुकी हैं, दोनों रह चुके हैं, और दोनों बुद्धा CEO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़कर मेडिटेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा मैम एक प्रोग्राम मैनेजर हैं बैंक ऑफ अमेरिका में, और सर एक हेडस्पेस में डेटा इंजीनियर रह चुके हैं जो कि एक मेडिटेशन ऐप है। तो इन सब के साथ हम और जानेंगे सर और मैम के बारे में और उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। आइए स्वागत करते हैं दोनों का। नमस्कार सर, नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें PSSM में। तो मैम आपसे शुरू करना चाहूँगी सबसे पहले। तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगी। पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी PMC हिंदी और चंद्र सर को, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है शेयर करने के लिए। हमें बहुत खुशी मिलती है हमारा मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे। मेरा नाम राधिका है, हम US लॉस एंजल्स में रहने वाले हैं। वहीं पे है, 30 साल से वहीं पे है। ओरिजिनली हैदराबाद से हूँ। मेरा USA में 2 बच्चे हैं, ये मेरा पति है। हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए ही आए हैं इंडिया में। मैं कॉर्पोरेट जॉब में रहती थी, इस साल के शुरू से मैंने छोड़ दी और फुल टाइम ये मेडिटेशन काम में लगी रही हूँ। जी, बहुत खूबसूरत मैम। सो सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, दैट वी वुड want to know about you, about your childhood and how you grew up and everything. Thank you. Yes, my name is Bose. Thank you for having me here. I was born in Andhra Pradesh in the 70s, and I was raised in a village, pretty calm, and we have pretty good childhood life. It's amazing. Then I started my college in computer engineering. Once I completed that, I happened to have a good opportunity in United States, and I migrated there and started working there. Since then, last 30 years, life is good, and but still going through a lot of stress and anxiety, all those feelings, and I came across Buddha CEO, and I did quite a bit of meditation and read a lot of books, and that's the reason I was able to freely sit here and talk. Meditation helps a lot. You can calm yourself and do whatever comes into your mind. So thank you again. Yeah, so you just mentioned that meditation has helped you a lot, and that was the point when since you joined Buddha CEO, that was the point you got to understand that meditation is going to help you in your life, and it has helped you actually through stress, through anxiety. So what was the point when you actually realized that I am going through this difficult situation and I should get into meditation? Right. So in the life, most of the times you don't even realize you are going through stress, anxiety. It becomes so part of you, and you
so fall in love with this drama daily basis. You want the drama, right? You want to talk about somebody else, good or bad. You want to know everybody else what's doing. Happiness. You're looking for somebody else all the time, in the money or in the job title, the car you own, the house and everything, right? You're looking for some happiness outside of you, right? I was working at Headspace. I did meditations in the Headspace, morning 10 minutes, in the afternoon 10 minutes. It helps a lot. It reduces stress a little bit, but the realization haven't happened until the COVID times came. And during the COVID times, I was introduced to Buddha CEO's Chandra Sir's meditations, and then slowly started meditating. And then I was lucky enough to have one of my friend, who Srinivas Ankareddy, introduced me to the book reading, right? So I read the books. What is that book? So that book, once we read, we realized, Surrender Experiment, how to get into the life, just surrender and take it. So at the same time, I got a call from a recruiter and asked me to switch job. I was unhappy at Headspace, right? After 6 years, and managers not working well with me or whatever. So I was not happy there. So then I surrendered to that call, and I took that call, and I joined them, and I was really happy. And then I continued to reading books, right? Book reading and meditation both helped me. My favorite book was Power of Now. The second favorite book is The Four Agreements. So the Power of Now tells, nothing matters. It's happiness internal. One of the main thing you should do is accept now, right? This is what you have. You never have tomorrow, you never had before. Only thing you have is now, right? Once you accept the current situation as is, and you can do whatever you want to do, but you accept that current situation, your life will be better. Was spirituality or being into religious thing was there in your family? What was there? When I'm growing, at the time in the villages where I grew up, the religious things used to happen every 3 months when the festivals happen, Vinayak Chauthi and Sankranti, Mukkoti kind of thing. So we used to go pray, do some bhajans, but day-to-day life there was no religious things that used to happen. One thing I used to do is, I used to do naughty things, not skip the schools or break something. Then my dad used to, give me one if I do naughty things, right? So I used to, pray my favorite God, who is sun. I used to look at him and pray that if my dad doesn't beat me, I'll pray more or something like that. Or, I used to bribe. You used to bribe God. God. I used to pray Shiva, hey, I just skipped the school and I don't want any trouble, so I'll break a coconut for you, kind of thing. So that was the religious thing, very subtle, mostly, having fun on the festivals. During the 10th class and intermediate, maybe a little bit, go to temple before the exam and pray a little bit to get passed through. But during my 12th grade, actually, for some reason, I stopped religious beliefs, right, the God and all. So for me, slowly, my understanding is this God is my father's belief or my priest's belief, and it's not my belief. So I stepped away from the belief system totally. All right. So was there any other curiosity of searching for something else, or was it like, okay, now I give up, I'll see it in future if I'm going to find something or not?
So there was no curiosity, the normal thing, why am I born? What is the purpose? Those questions, I don't have it. For me, I feel like, this eternal life, right? And it's always there, right? And then it's infinity and the body is divine. I don't understand so many things, but I don't pursue the answer. It's beyond my understanding and I leave it at that. So I don't question, but I feel like I am nobody. It's eternal. My existence is so small, so short, it doesn't even matter. So I exist or not. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे लेना चाहूँगी, मैं इस बात पर क्यों आई, क्योंकि हम जब ध्यान में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं जिनके बारे में आपने पहले भी जिक्र किया, तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे। मुझे एक्सपीरियंसेस ऐसा है कि मैं जान चुकी हूँ मेरा एंग्जाइटी कहाँ से आती है, वरीज कहाँ से आते हैं, क्या है ऐसा बोलने से, लाइफ से अपना ईगो कहाँ से आती है, सब ये दुख सब कहाँ से आती है, वो समझ चुकी हूँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। वो मैं पूछती थी चंदा से सब लोग बता रहे हैं, वो ये देखती हूँ, मुझे तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आते ऐसा। मगर इतना बदल चुकी हूँ मैं, पहले यही पहचान लिया फर्स्ट 40 डेज है, तुम जो भी कर रही हो वो छोड़ना मत वो कंटिन्यू करना। तो इतना बदलाव आ गया, इतना शांति मिली है, बहुत कुछ खो चुकी हूँ मेडिटेशन से, वो वरीज एंग्जाइटी सब चला गया। तो वही था मेरा एक्सपीरियंस। मैं और मैनिफेस्टेशन वो भी इतना समझ चुकी हूँ। हमारा थॉट ही करती है, हमारा लाइफ हमारा थॉट से ही बनती है। सो वो भी समझ चुकी हूँ। मुझे ऐसे बोस बता रहा था, मुझे भी बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन था मेरे जॉब में। जैसे मैं भी 6 साल से काम कर रही थी, तो मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन आता था। मैं तो वही क्या है, सेम कुछ ऐसा ही चल रहा है। मगर वो 40 दिन मेडिटेशन के बाद इतना खुश थी मैं, मेरा जॉब भी अच्छे लगने लगे। सेम जॉब सब कुछ अच्छा लगने लगे। इतना मैं समझ चुकी हूँ, वो कुछ भी बदला नहीं, मैं बदल चुकी हूँ अंदर से, इसीलिए सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तो मैं जॉब भी एंजॉय करने लगी, बहुत कुछ करने लगी जॉब में। तो मैं बिना ऐसा सोचे ही मेरे अच्छा सा अपॉर्चुनिटी भी आके ऐसा मेरे गोद में पड़ा। सो वाज इट लाइक आपने मैनिफेस्ट किया था और वो हो गया? नहीं, मैं पहले सोच रही थी ये जॉब छोड़ना है, कुछ अच्छा जॉब आना है। मगर मेडिटेशन में मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कुछ भी नहीं। ये जॉब भी ठीक है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उस समय आके मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी आ गया। तो जब आपने उस बर्डन लेना छोड़ दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब अपने आप से सामने से एक और खुशी और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आके मिला मुझे। जी। सो नाउ दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस, हाउ डू यू फील अबाउट इट? I'm actually taking a step back with knowing whatever is happening, So don't look for too many things, I want this, I want that. So have a peaceful, happy life. Take care of your garden, do something, right? Pick up the phone, talk to your parents, call your friends, give a hug to your kids, your wife. Forgive your spouse if there is something friction, so that no more conflicts or no more expectations, so more peaceful inside. So continue that life, and still, as a human, I'm not a Buddha, so I will have my ambitions. Say I have 20-30 years left of my life. What should I do, right? Should I travel? Should I spend time with kids? Should I go spend time with my mom? Those kind of things I find out and I prioritize, and I want to, do that. But at the end, life is life, 60, 70 years. You have to deal. Yeah. You have to So face. when you are here, make full use of it rather than go through stress, anxiety, and, chasing things. Enjoy what you have. Work for other things, that's okay.
वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैम अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी शाकाहार के ऊपर। तो क्या आप शाकाहारी अभी हैं या ध्यान में आने के बाद हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं शाकाहारी नहीं थी, यूएस में रहती थी, तो मैंने 1-2 बार ट्राई किए शाकाहार बनने के लिए, मुझसे हुआ नहीं। मगर वो 40 डे प्रोग्राम होने के बाद कंप्लीट शाकाहारी बन गए। वो पहले कुछ जो जॉब में ट्रैवल करते हैं वहाँ पे कुछ थोड़ी जगह में वो मुश्किल हो जाता है शाकाहारी मिलना भी, और जो कंपनी वाले एग्जीक्यूटिव जाते तो वो ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ कुछ नहीं मिलता थे। मगर हमें अभी वो ध्यान में आने के बाद वो खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो वो अचानक आ गया वैसा है, तो मुझे ट्राई भी नहीं करना पड़ा। तो कुछ भी मिलता था। अब जब आप वो हो गए हैं तो आपको मिल जाएगा। हम लोग ट्रैवल भी बहुत कर चुके हैं, बहुत अदर कंट्रीज़ में, जो शाकाहार मिलना बहुत ही मुश्किल, फिर भी मुझे मिल गया शाकाहार। तो इतना मुश्किल नहीं है, वो आपको अंदर से आना है तो वो हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस अंदर से आपके मन में इच्छा मन होनी में चाहिए, इच्छा वो होने छूट से वो जाएगा। हो जाएगा। जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, सो नाउ दैट वी आर डूइंग मेडिटेशन, हाउ आर यू स्प्रेडिंग दिस मैसेज ऑफ मेडिटेशन इन पीपल? When I joined my new company, Snap Finance, I actually sent out a weekly meditation session with my 20-30 colleagues, and I was conducting weekly meditations. I used to play Chandra Sir's meditation sessions. I used to play Headspace meditation sessions, and few people who used to come. That's how I want to spread, bring my colleagues into the meditation. Now I also go to walking meditations on the beach once in a while, go early in the morning, and that's so refreshing, the walking meditations on the beach. And whenever my kids are around, I used to bring them into meditation. I wanted to do meditation with my mother, so once I go back to my village, I'll try to bring her to the meditation. There is a lot of stigma, obviously, meditation, it's not easy to introduce, it's not easy to continue, but I'll try my best to support my wife probably to build the app, and that's how I can spread. It's actually on a very big level you're talking, because it's very important for people to at least connect with you. Once they're connected, they'll definitely join your app and everything which you are doing. Very Right. beautiful sir. Right. तो मैम जैसे सर ने अभी बताया कि सर ध्यान प्रचार कर भी रहे हैं ऐप्स के थ्रू, जो अभी बनाना भी चाह रहे हैं वो भी, और सर जो वॉकिंग बीच के बारे में बता रहे हैं मेडिटेशन, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, वो अभी शुरू किए हैं, हम भी जा रहे हैं वहाँ पे, भी थोड़ा पता चलना चाहिए। सो मैं पहले मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को बताई, मेरे सिस्टर इन लॉ ज्वाइन किए, मेरे ब्रदर इन लॉ ज्वाइन किए, मेरे नेफ्यू नीसेस, मेरे बच्चों को भी एक साथ इकट्ठे करके बोले ट्राई करो। बच्चों सुनते नहीं हैं, अब वो भी कहते हम फोर्स नहीं करेंगे। मैंने जब बस ट्राई करो, मैं ये टीच करना चाहती हूँ, आप लोग से शुरू करूँगी तो आप मुझे हेल्प करो। तो बोले ठीक है चलो करते हैं, आप आपकी हेल्प करने के लिए। तो मैं मेरे बच्चे और मेरे नीसेस नेफ्यू से ये पहले एक ही हफ्ता करेंगे, फिर 3 हफ्ते करें वो सब लोग। सो ऐसा शुरू की मैं एक घर में ही। देन मैं बहुत अपना फ्रेंड सर्कल में बताए। जब चंद्र सर यूएस आए लास्ट ईयर, तो श्रीनिवास सर मैं मिलकर 2.5 days सेशन रखे क्लासेस में। हमारे 50 पीपल और फ्रेंड्स सबको इनवाइट किए। वहाँ पे पता चलना चाहिए ऐसा ध्यान भी है, वो फ्री है, आप कभी कर सकते हैं। तो ऐसा शुरू किए हैं, अभी कर रहे हैं। मैं जब भी कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में, तभी बताया मैं मेडिटेशन करती हूँ। सो सब लोग पूछते हैं क्या है वो है, ऐसा शुरू किए हैं। वहाँ पे बहुत सारे CEOs है यूएस में जो मेडिटेशन करते हैं, वो मुझे मेडिटेशन आने के बाद पता चला वो भी करते हैं सब लोग। सो अभी इतना ओपनली शेयर नहीं करते, मगर हम शुरू करें तो सब शेयर करने लगते हैं। वैसे ही शुरू किए हैं हम।
अभी मैं आकर यहाँ पे वो ऐप बिल्ड कर रहे हैं। सो हमारा गोल है कि सबको पता चले ये, बिकॉज ये सबसे आसान मेडिटेशन है और हम सबको देना चाहते हैं। इसलिए मैं मेरे जॉब छोड़ के आ गई यहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है करना, इतना अच्छा है मेडिटेशन, सब सवालों का आंसर है। सो बेसिकली हमारा एम ये है कि कॉर्पोरेट जो सेक्टर है पूरा, उसमें भी मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। एटलीस्ट वो अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करे, ताकि वो जो एक पूरा का पूरा दिनचर्या अपने वहाँ बिताएं, बहुत खूबसूरती से बिताएं। तो इसके साथ ही मैं आप दोनों से एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि ध्यान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ध्यान हर जगह है, बस हमें करना है। तो एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे ध्यान को लेकर? डेफिनेटली ध्यान ऐसा है, ये ऐसा एक 40 डे मेडिटेशन करो हो गया तो सब लोग वो इनफ नहीं है। ध्यान एक बहुत लंबी जर्नी है, हमको प्रैक्टिस करना है, एवरी डे प्रैक्टिस करना है। जो इन ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे बोस ने कहा है, वो ग्रुप मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है, वो ग्रुप मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन। बट एक ही बात है, ध्यान छोड़ना मत, कंटिन्यू एवरी डे, एंड बहुत ही बदलाव आएगी, सबका आंसर मिल जाएगा। सो ध्यान तो हर दिन करना है। सर, योर क्लोजिंग मैसेज हमारे सारे दर्शकों को? Yes, definitely. The life doesn't have to go through the drama. We have control on how we live and how we not fight with others. So we can stop the day-to-day, drama in our lives and be happy and content with our lives. Couple of things you could do is, number one, stop expectations. The no expectation, zero expectation from others will make you happy. The second one is, I would say, forgive others. Whatever they do, bad things for you, whatever their intent is, just forgive. That forgiveness is going to make you so peaceful, so calm. And keep meditating and identify some of these traits like anger and anxiety and stress. Identify in yourself and go with an intent to remove those traits from you, and keep meditating and be in the present, and you'll make peace with your life. That's going to change your life. Very beautiful, sir. Very beautiful, ma'am. Very, very thank you for both of you coming here, giving your time and sharing your wisdom with us. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने हमें अपना वक्त दिया। Thank you. It was wonderful talking. Great discussion. Thank you for having us here. तो दर्शकों, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से सर और मैम ने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा की। उन्होंने बताया कि लाइफ एक ड्रामा है, हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें ध्यान करना है ताकि हम उसे सुलझा सकें। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।